Hello student, this question from the diode chapter, yes, and the question is asked in 2017 GATE exam for 2 marks, and the question is very easy, yes, if I just try to solve it. And the question is like this, yes, an abrupt p-n junction located at x is equal to 0 is uniformly doped on both p and n side. The width of depletion region is w, and the electric field variation in x direction is E of x. Which of the following figure represent the electric field profile near the PN junction? So we have a four option. We need to choose the correct one, and we see the solution of this question in very much detail. So देखिए ध्यान से, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल को ड्रॉ करना है, तो जो मेरे पास लाइक पीएन जंक्शन जनरली आई इन बेसिकली द थ्योरी क्लासेस वी सी कि कहने के मेरे को पीएन जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल पता है। तो एक बार हम अगर एन पी मीन साइड से दिस, यहाँ पे उसने क्या कर रखा है कि एन साइड को लेफ्ट साइड का रखा है और पी को आपके राइट साइड का रखा है। और जैसा कि आपको पता है कि एन में क्या होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं अलॉन्ग विथ व्हाट, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और जो पी होता है उसमें क्या होता है, आपके पास नेगेटिव आयंस होते हैं अलॉन्ग विथ व्हाट, होल्स। तो ये मेरे पास इस तरह से इसमें होल है, नेगेटिव आयन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस है। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, होल इधर आते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे आपको डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, और बिकॉज ऑफ दिस बैरियर यहाँ पे फिर आपका फ्लो रुक जाता है। ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो खैर देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है। सो आई से दिस इज वी हैव कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर, एंड हियर वी हैव सम पॉजिटिव चार्ज, this is positive charge here, and here we have some negative charge, and this is we have। तो जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे कि चार्ज डेंसिटी की बात करें, मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो होप सो दिस शुड बी q and d। ओके, सो दिस इज वी हैव पॉजिटिव प्लस q and d पर यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि nd क्या है, दिस इज नंबर ऑफ डोनट पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना होंगे, तो आप ऐसे कह सकते हैं दिस इज वी हैव q and d। अगर इधर की बात करें तो here we have minus q n a। so this is I say the charge density, or I say this charge per unit volume, this is available here। now we just try to observe that। एक बार अपने एम पे वापस आते हैं। जैसा कि मेरे को इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। तो अगर मैं यहाँ के वोल्टेज को अगर एक मिनट के लिए जीरो ले लें, और इधर साइड के वोल्टेज का डेफिनेटली वी हैव ए वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, या आप ऐसे कह सकते हैं जो बैरियर है वो वी नॉट का है, तो अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वी नॉट हो जाएगा। अब देखिए ऐसा नहीं है, ये पोटेंशियल इस तरह से राइजिंग है। सो हियर वी ऑब्जर्व दैट वी हैव सम वोल्टेज फंक्शन, यहाँ मेरे पास वोल्टेज फंक्शन। तो दिस इज आई से दिस इज वी वन ऑफ एक्स, वी टू ऑफ एक्स। तो अगर यहाँ वी वन ऑफ एक्स है, सो हियर वी ऑल्सो गेट द ई वन ऑफ एक्स एंड ई टू ऑफ एक्स। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द ई वन एक्स ऑफ एंड ई टू एक्स ऑफ। So we have only one way to calculate the E1 of x and E2 of x is basically the Poisson equation. So what about the Poisson equation? So I say the Poisson equation says that the second derivative of the voltage with respect to distance, it should be what, minus rho by epsilon, and this rho is basically called the what, charge density, charge per unit volume. Now if I write the equation for the x is minus wn to 0, so what we observe, the voltage function is v1 of x. So if I write the equation for minus wn to 0, so what should be, I say it should be uh, second derivative of v1 of x with respect to distance, it should be minus rho by epsilon. And what about the rho for this minus wn to x? So this is q and d. So this is q and d divided by epsilon. So this is we have, so minus wn to x. Now I need to basically calculate the e1 of x. So I just integrate both side. So whenever I integrate, so what we get, this is we have, एंड इट शुड बी कांस्टेंट नंबर। सो कांस्टेंट को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस ये डबल डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्योंकि यहाँ लिमिट्स नहीं मेरे पास है, यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सो वी नीड टू पुट c हियर। तो ये कहानी यहाँ तक कहीं ना कहीं मेरे पास पहुंच गई। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा इसमें और एक बार ध्यान से देखें, इन द 12th क्लास वी ऑब्जर्व दैट कि जो आपका ई ऑफ एक्स है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो ई है वो क्या होगा, माइनस डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज वी हैव, so E of x is equal to minus dvx upon dx, yes, and this minus sign indicating that the electric field always from higher potential to lower potential. So see, अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज E1 of x is equal to, I say this here minus q and d upon epsilon into x plus c. Now we need to calculate this c. So how we calculate, we need to apply the what, boundary condition। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ऐसे कह सकते हैं दिस रीजन इज बेसिकली द न्यूट्रल, yes। So here we observe that the electric field is 0. So at this point we observe that at x is equal to minus wn, E1 of x is equal to 0. तो at x is equal to minus wn, what we observe that, the electric field is 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी, क्योंकि न्यूट्रल, उधर भी न्यूट्रल रीजन आपका है। Okay, so if I just try to apply this situation here, so this number should be 0 here, so it should be 0, E1 of x is 0, and here I just put q minus minus plus here, q and d wn upon epsilon, and this is plus c,
And what about this C? So C should be some negative number, so C is equal to minus Q nd Wn upon epsilon. So this is, we have a, C. Now if I replace this C here, so what is this? I say this minus E1 of x is equal to minus Q nd x upon epsilon minus Q nd Wn upon epsilon. So this is, we have a number. So hope so this calculation is very much like clear. Okay, so this minus, if I ignore here, so what we get? I say this this Q nd upon epsilon, and it should be x plus Wn. तो कहीं ना कहीं E1 ऑफ x की वैल्यू ही आ जाएगी. अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप, तो कहीं ना कहीं ये y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है. And I observe that this expression is valid whenever the x is belongs to minus Wn to 0. Now if I try to draw, whenever we have x is equal to minus Wn, we get the what? 0 electric field, yes. And whenever at x is equal to, I say 0, so what we get? I say this E1 of x is equal to, we get Q nd एंड Wn अपॉन एप्सिलॉन. और यहाँ से एक बात और भी क्लियर हो रही है कि वी गेट द मैक्सिमम, क्योंकि अगर देखें ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है ना, वो कहीं फंक्शन ऑफ एक्स है. तो जिस टाइम ये एक्स, अगर आप कहें इस नंबर की बात करें, जिस टाइम ये नंबर सबसे ज्यादा होगा, नंबर सबसे ज्यादा तभी हो सकता है जब आपका एक्स 0 हो. सो एट दिस पॉइंट वी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द जंक्शन. This is, we have the electric field is maximum at the junction. So this is Q nd Wn upon epsilon. So if I just try to draw the electric field pattern, so what we expect? I say this is, we have. So here we get the maximum electric field, and which is very much a straight line. This is minus Wn. Okay, in very much similar fashion, I'm not just in very much similar fashion, if I start to calculate your E2 of x, so we get the E2 of x is like that. And this is x, and here this is, I say this electric field pattern. So hope so the answer option is minus Wn to Wp. और इस तरह से जो ऑप्शन आपका होप सो जो ए पार्ट है, विच इज, आई से करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका माइनस Wn टू Wp में. देखें तो मैक्सिमम कहाँ पे है? जंक्शन पे. अगर आपका p इधर होता है, n इधर होता, तो ये आपका पलट जाता है, इस तरह से नीचे आ जाता. तो वो नहीं है यहाँ पे, आपने एन और पी को होगा, लेकिन जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है. माइनस Wn पे 0 होगा, Wp पे p क्या होगा? 0 होगा. और हमने क्या करता है, जो आपका दूसरा पार्ट है E2 ऑफ x, विच इज ऑल्सो वी टेक वेरी मच सिमिलर फैशन. कैसे उसको ऑपरेट करेंगे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. यहाँ पे जैसे इसको रखेंगे तो ये माइनस रखना पड़ेगा, सो इट बिकम प्लस. नाउ इंटीग्रेट, अगेन वी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस. आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ही आप क्या करेंगे, x की जगह Wp रखेंगे, and definitely we get your C, and I replace it, so we get this equation. Again we get the straight line, and we observe that कि कहीं ना कहीं आपको x is equal to 0 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और x is equal to Wp पे ऑब्जर्व करोगे, आपको क्या मिलेगी? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड whenever the n is left side and the p is right side. अगर आप p इधर कर दो, n उधर कर दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा. सो होप सो वी अंडरस्टैंड the solution of this question. Okay, thank you for watching this.